बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कनाडा के एक शहर लंदन ओंटारियो में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया जिसमें 4 मासूम जानें ज़ाया हुई और एक 20 साला नौजवान ने एक फैमिली पर, जो कि वॉक करने के लिए निकले हुए थे, उन पर गाड़ी चढ़ा दी। और ये उसका एक दानिस्ता अमल था। एक कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये सोचा समझा मंसूबा था। ये एक मुसलमानों से नफरत का इजहार था। उसके बाद कनेडियन कौम ने जिस तरीके से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तमाम शोबा हाइजात से ताल्लुक रखने वाले कनेडियंस ने इस अमल की मजम्मत की और सबसे बढ़कर कनेडियन वजीर-ए-आज़म मोहतरम जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब ने टेलीविजन पर आकर उन फैमिलीज के साथ, उस फैमिली के साथ और मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। ये वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family. Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. Monsieur le Président, je suis horrifié par l'attaque La Grande Islam Zafis at a mosque in Toronto, the violent attacks against black Muslim women in Edmonton, and so many other people across the country who faced insults, threats, and violence. They were all targeted because of their Muslim faith. This is happening here in Canada, and it has to stop. Monsieur le Président, pervasive trend, and sometimes they lead to real violence. The jokes that are not funny, the casual racism, the insinuations that are only meant to diminish, the toxic rhetoric, the disinformation and the extremism online, the polarization we see too often in our public discourse and in our politics. As leaders and as Canadians, we not only have to say enough is enough, we must take action. We cannot allow any form of hate to take root, because the consequences can be far too serious. We've seen it in Christchurch. We've seen it in other places around the world. And we've lived it here at home. Right now, Canadians are outraged by what happened on Sunday. And many Muslim Canadians are scared. Last night, I spoke with the Mayor of London, Ed Holder, and a representative of the local Muslim community, Nawaz Tahir, to share my condolences and discuss the urgency of what more we must do to keep our communities safe. Mr. Speaker, we stand with the people of London and with Muslim communities across the country. We're going to continue to fund initiatives like the Security Infrastructure Program to help protect communities at risk and their schools and places of worship. We'll continue to fight hate online and offline, which includes taking even more action to dismantle far-right hate groups, like we did with the Proud Boys, by adding them to Canada's terror listing. We'll continue doing everything we can to keep communities safe.
Luther, Mr. Speaker, if anyone thinks racism and hatred don't exist in this country, I ask to them this: how do we explain such violence to that child in hospital? How can we look families in the eye and say Islamophobia isn't real? When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her, she'll tell you Islamophobia exists. If you listen to the parents who beg their children not to wear traditional clothes for fear of them being harassed or attacked simply for what they're wearing, I'll tell you, racism exists. Muslim families have often felt uncertain or even fearful when they go out in the streets wearing traditional garb. The reality is, most Canadians haven't necessarily been aware of that fear that far too many racialized and Muslim Canadians carry with them anytime they go outside. If the attack in London has any follow-up or I don't even want to say positive, but any impact on non-Muslim Canadians, it should be this: to understand the anxiety and the fear that our fellow Canadians carry, that they shouldn't be. And it is on all of us to understand that experience and be there to support and to help. We can and we must act. As Canadians, we've been fighting a global pandemic for over a year now. We did it by coming together, in the ugly face of hatred. I want all Canadians to know that we are all diminished when any one of us is targeted. We need to stand up to reject racism and terror and work together to embrace what makes our country strong, our diversity. May peace and blessings be upon you. इससे पहले न्यूजीलैंड में जब एक वाकया पेश आया था तो उस वक्त न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने भी एक बहुत ही उम्दा मिसाल कायम की थी। मगर इसके बरक्स मुस्लिम कहलाने वाले मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अहमदियों की मसाजिद पर हमले होते हैं, नफरत की खुल्लम खुल्ला तालीम दी जाती है। इस नफरत की तालीम को फैलाने में वजीर कबीर और हुकूमत के नुमाइंदे और कारिंदे एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम पीछे न रह जाएं। बल्कि वजीर आजम साहब खुद भी मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। हम नहायत अदब से गुजारिश करेंगे वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान से कि सबक सीखें जस्टिन ट्रूडो से। कनाडा का वजीर आजम जिस अंदाज में मुसलमानों से इजहार यकजहती करता है, उससे सबक सीखें और देखें कि हमारे और उनके तर्ज अमल में क्या फर्क है। तो आपको अंदाजा होगा कि सही इंसानी इक़दार यहाँ कनाडा में उनका ख्याल रखा जा रहा है। उसके बरक्स पाकिस्तान में ये दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि हम अपने तमाम शहरियों को बराबर के हकूक देते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको आईना दिखाया जाए कि आपका अमल क्या है और आपकी जो मुंह की बातें हैं वो क्या है। क्या इन तरीकों से आप जो फैटफ की लिस्ट है, जो ग्रे लिस्ट है, उससे निकल जाएंगे? अपना तर्ज अमल आपको ठीक करना पड़ेगा, अपने घर को ठीक करना पड़ेगा।
जिंदों की बात तो जाने दीजिए, एक अहमदी खातून जो फौत हो गई तो उसको दफन कब्रिस्तान में दफन कर देने के मामले पर भी ऐसा गैर इंसानी सलूक देखने में आया। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले बहुत से वाकयात ऐसे हो चुके हैं जबकि कब्रों में से कब्रों में दफन हो जाने वालों को भी उन्होंने निकाल बाहर किया और फिर पुलिस ने किसी और जगह पे जाकर इस तरीके से उनको दफन किया। तो ये मौलवियों की ये हरकत ये कोई ढकी छुपी नहीं है। आप आईने में अपना चेहरा देखें और अपने आप को पहचानें और इस्लाम मजहबी रवादारी की तालीम देता है। हमारा मजहब, हमारी तालीम, हमारा कुरान, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इस बात के करीब हैं कि वो इंसानियत की तालीम देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के वासियों का जो अमल है वो इसके बिल्कुल मुखालिफ है। तो अपनी पहचान दुनिया में इस तरीके से मत बनाएं कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, और मजाक उड़ाते हैं। अपनी पहचान एक अच्छे शहरी के तौर पर बनाएं। दुनिया इस वक्त 21वीं सदी में है और 21वीं सदी में जबकि ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया हर बात को कैच कर लेता है, तो आपकी ये हरकत कोई ढकी छुपी नहीं है, ये सारी दुनिया में पहुंच रही हैं। वहां जो बैठे नाम नहाद उलमा या दूसरे जो लोग हैं, जो इवन हुकूमत के कारिंदे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हम अपने मुल्क में कुएं के मेंढक की तरह बैठे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। तो ऐसी बात नहीं है। आपकी ये हरकतें सारी दुनिया में पहुंच रही हैं, इसलिए अपनी इस्लाह कीजिए और उन कुफ़ार की पैरवी कीजिए जो आपके नजदीक हैं तो कुफ़ार, लेकिन इंसानियत के अलमबरदार हैं, उनकी पैरवी कीजिए ताकि आपको कुछ इस्लाम की तालीम का पता चल सके। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।